Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel, Storyland Official, and a very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries, and suggestions. I am Ummi Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of unit number 5, the toy box, from New Oxford Modern English, book 6. Let's start today's lecture with prayer. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. The first section of exercise is section A, verbs and object. Number 1 है examine these two sentences. इन दो जुमलों को जांचें. The verbs are in italics, verbs italics में है. Number 1 है I heard some noises, और number 2 है he paused. इसमें italic words हैं heard and paused. तो हम डिस्कस करेंगे. The first sentence would not make sense without the word some noises. Some noises का वर्ड ना हो तो फर्स्ट सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता. We have to know what was heard. हमें जानना है कि क्या सुना गया. The verb heard needs an object to complete the sense. सेकंड है द सेकंड सेंटेंस मेक सेंस. दूसरे जुमले का मतलब बन रहा है द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ही. द एक्शन डज नॉट पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ओवर नहीं हुआ. इन द फर्स्ट सेंटेंस पहले जुमले में द वर्ब नीड्स द एन ऑब्जेक्ट. वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. इन द सेकंड सेंटेंस दूसरे जुमले में द वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है जुमले की सेंस मुकम्मल करने के लिए या जुमले का मायने बनाने के लिए. जुमला मुकम्मल लग रहा है ऑब्जेक्ट के बगैर भी. सो यू सी, आपने देखा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब की मुख्तलिफ इकसाम है. यू विल लर्न मोर अबाउट दीज वर्ब्स लेटर ऑन. नंबर 2 है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग. नीचे जो सेंटेंसेस है उसमें से वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. विच वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस. इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है राइट इट इन द स्पेस, उसको खाली जगह में लिखिए. इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट राइट नन. अगर ज़रूरत नहीं है तो आपने लिखना है नन. ए है आई स्टूड इन साइलेंस. बी है यू विल सी व्हेन वी गेट देयर. और सी है एज आई एंटर्ड द रूम आई फेल्ट a draught of air. Typing mistake है, I नहीं है, a draught of air. Next sentence is D. He passed in mid-flow. E. He rattled the rusty doorknob and struck the door. First में देखते हैं verb है stood, needs an object, no, और object है none, कोई object नहीं है. B है you will see when we get there. Verb है see और get. See needs an object, but when we get there acts more like a time gloss here. So no direct object. Direct object इसमें कोई भी नहीं है. Object for see is none and get doesn't need an object. get को किसी object की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. Object for get is none. Next is C. As I entered the room I felt a draught of air. Verb है entered and felt. Entered needs an object. Object for entered is the room. Felt needs an object. Object for felt is a draught of air. इसमें दोनों verbs को objects चाहिए. D है he passed in mid flow. इसमें verb है past. Needs object no. Used intransitively here. और यहाँ पे object की कोई ज़रूरत नहीं है. Object है none. E है he rattled the rusty doorknob and struck the door. Verb है rattle and struck. ये दोनों verb use हुए इसमें rattled और struck. Rattled needs an object. Rattle को एक object की ज़रूरत है. Object for rattled the rusty doorknob. और struck को भी एक object की ज़रूरत है. Object for struck is the door. Next section of exercise is section B, a different subject. Number 1 है change the following statements in the way shown in the example. Example में एक statement दी गई है, इस तरह से हमने इसको change करना है sentences को. Example है the rubbish from the side of the house was removed by us. ये solved form है इसकी. और original है we removed the rubbish from the side of the house. ये हमें given है sentence I heard a feeble cry. B है I found Matilda in the bedroom. And C, my sister blamed me for the moodiness of my parents. The next sentence is D. I was followed to the playroom by them. E. The light was given us some courage. The light has given us some courage. Change करने के बाद है a feeble cry was heard by me. Number 2 है Matilda was found in the bedroom by me. 3 है I was blamed by my sister for the moodiness of my parents. Number 4 है they followed me to the playroom. और number 5 है we were given some courage by the light. बेसिकली यहाँ पर जो sentences हमें given है वो active voice में और उनका हमने passive voice में change करना है. The next section of exercise is section C, dictionary work. Number 1 है I find these words in a dictionary and write a short definition of each. इन words की अपनी definition dictionary से लेनी है. जो पहला word है वो है floorboards, long planks that are used to make a floor. दूसरा है doorknob, a handle on the door that is turned on to release the latch. The next section of exercise is section D, speech practice.
नंबर 1 पे हमें कहना है कैन यू से दीज क्विकली, क्या आप इनको जल्दी जल्दी बोल सकते हैं. रिपीट देम अ फ्यू टाइम्स वेरी क्विकली एंड सी व्हाट अ मेस यू मेक ऑफ देम. ये बेसिकली सिंपल सेंटेंसेस नहीं, टंग ट्विस्टर्स हैं. ए है सच प्रैंक्स फ्रैंक्स प्रॉन्स प्ले इन द टैंक, और बी है सम शन सनशाइन सम शन द सैंडी शोर. नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ई composition. Here is a short extract from of a book called Encounters with Animals by Gerald Durrell. Most people, when they learn for the first time that I collect wild animals for zoos as the same series of questions in the same order. तुम लोगों को पता चलता है कि मैं जू के लिए जानवर इकट्ठे करता हूँ तो वो सेम ऑर्डर्स में सेम क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं. फर्स्ट दे आस्क इफ इट इज़ डेंजरस, सो टू विच द आंसर इज़ नो. पहले पूछते हैं कि ये काम खतरनाक है, जिसका आंसर है नो. इट इज़ नॉट, ये नहीं है. प्रोवाइडिंग यू डू नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक, जब तक आप कोई अहमकाना हरकत न करें. देन दे आस्क हाउ आई कैच द एनिमल्स, फिर पूछते हैं मैं जानवर कैसे पकड़ता हूँ. अ मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, फॉर देयर आर मेनी हंड्रेड वेज ऑफ कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स. समटाइम्स यू हैव नो सेट मेथड but have to improvise something on the spur of the moment. इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है क्योंकि इसका कोई खास तरीका नहीं है और बाज़-औक़ात एन मौके पर हमने अपने प्लान को बेहतर बनाना होता है. द थर्ड क्वेश्चन इज इनवेरिएबली डोंट यू बिकम अटैच्ड टू योर एनिमल्स एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू पार्ट व्हेन देम विद देम एट द एंड ऑफ एन एक्सपीडिशन. किसी मुहिम के आखिर में क्या जानवरों से अलग होना मुश्किल नहीं होता. द आंसर इज ऑफ कोर्स बेशक दैट यू डू एंड समटाइम्स पार्टिंग विद क्रिएचर वी हैव केप्ट फॉर 8 months कैन बी हार्ट ब्रेकिंग प्रोसेस. एक दिल दुखाने वाला अमल होता है जब आप 8 महीने एक जानवर के साथ गुजारें. इसके बाद हमें गिवन है वर्ड्स टू नो. When they learn, this means that people meeting Gerald Durrell for the first time do not necessarily know he is a collector of animals. They find out by asking questions, improvise, compose, make up, on the spur of the moment, a decision taken without a moment's forethought. Invariably, almost always the same. Become attached, become close to, feel for. Number 1 है, try to write a dialogue conversation between a person who has just been introduced to Durrell and the collector himself. इसमें हमने एक डायलॉग लिखना है, एक कॉन्वर्सेशन बतानी है इस पैराग्राफ के बेस के ऊपर जो हमने पहले पढ़ा है जेरल्ड ड्यूरेल के बारे में, कि वो एनिमल्स इकट्ठे करता है जू के बारे में और लोग जो उससे क्वेश्चंस पूछते हैं. इस स्टोरी या इस पैसेज को हमने एक डायलॉग की फॉर्म दे देनी है. Read the passage again if you want to know what people invariably ask Mr. Durrell. The conversation has been started for you. Mr. Haroon is introducing Mr. Durrell to Mrs. Shah. Mr. Haroon, Mrs. Shah, I'd like you to meet Gerald Durrell, the famous author and collector of wild animals. Mr. Durrell, this is Mrs. Shah. अब Mr. Durrell की बारी है. Hello, I'm pleased to meet you. Mrs. Shah, how do you do, Mr. Durrell? Did I hear correctly that you collect animals? Continue the conversation in your notebook. अपनी notebook में इस conversation को continue करना है if you like. Number 2, have the friend read out the dialogue. Do they sound natural? Can you make it better? क्या आप इसको बेहतर भी बना सकते हैं? सेम डायलॉग को मैंने 2 to 4 लाइन्स तक इसको कंटिन्यू किया है. मिस्टर ड्यूरल, येस दैट्स राइट, आई कलेक्ट वाइल्ड एनिमल्स फॉर जूज. मिसेस शाह, ओह माय, इजंट दैट डेंजरस वर्क? मिस्टर ड्यूरल, नॉट रियली, एज लॉन्ग एज यू डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक्स. Mrs. Shah, how do you catch the animals? Then it must be very tricky. Mr. Durrell, sometimes it is. There's no set method. Often you have to think quickly and improvise. The next section of exercise is section F, synonyms. Number 1 है match the words in A with the synonyms in B. Write the pairs in the blanks. Blanks में हमने इनके pairs को complete करके लिखना है. 2 columns में हमें words given है, उनको हमने synonyms की form में pair बनाने हैं. वर्ड्स देख लेते हैं. कॉलम ए है कनिंग, अपसेट, अफेयर्स, केयरफुली, फिनिश्ड, लिव्ड, डीपली, प्लान, स्विफ्टली, पीपल, ओबीडिएंट एंड गैदर्ड. बी में है स्टूडेंट, कलेक्टेड, डेवलप्ड, क्विकली, कंप्लीटेड, ब्यूटीफुल, क्राफ्टी, मैटर्स, प्रोफाउंडली, कॉशियसली, डिस्ट्रेस्ड एंड स्कीम. इनके पेयर्स बनाने के बाद हम देख लेते हैं. Cunning, crafty. B, upset, distressed. C, affairs, matters. D, carefully, cautiously. E, finished, completed. F, lived, dwelt. G, deeply, profoundly. H, plan, scheme. I, swiftly, quickly. J, pupil, student. K, obedient, dutiful. And L is gathered or collected. The next section of exercise is section G, verbs and nouns. Number 1 है, look at the following sentences. दिए गए जुमलों को देखिए. The nurse gave the patient an injection. यहाँ पे nurse का word as a noun यूज हुआ है. The staff at the hospital nursed the patients with great care. यहाँ पे ये word जो nurse है as a verb यूज हुआ है. Write 2 sentences for each word given below. नीचे में कुछ words दिए गए हैं. हर words को लेके हमने 2 sentences बनाने हैं. एक में उसको as a noun यूज करना है और B उसमें as a verb यूज करना है इसको. वर्ड्स देख लेते हैं. नंबर 1 है क्लब, नंबर 2 है लोफ, 3 हैच, 4 मैच, 5 ब्रेक एंड 6 प्लान और 7 लास्ट. और लास्ट हमारे पास 8 वर्ड हैं ऑर्डर. सेंटेंसेस को देख लेते हैं. 1. The members of the club meet every Wednesday at 7 p.m. The boys clubbed together to buy a cricket bat. 2. The girls bought a loaf of bread. Then they loafed around waiting for their mother to come home. 3. The ship sank because the hatch was open when the big wave came.
Ali and Nazim hatched a brilliant plan to hide the mangoes. 4. The match will be on Thursday at 2 p.m. Match these cards and put them in pairs. 5. During the meeting, there will be a 10-minute break for coffee. Please do not break the window. 6. The plants for the new school were eaten by the school goat. Anil planned to go to Multan in July. 7. The shoemaker worked on his last. The boxer only lasted 10 minutes in the ring. 8. The waiter quickly took our order for coffee. The policeman ordered the thief to get off the stolen bicycle. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.